Anika. Hi guys, so अभी मैं रेडी हो गई हूँ. मेहंदी और संगीत का फंक्शन स्टार्ट होने वाला है. फिलहाल मेहंदी का फंक्शन चल रहा है और आप देख सकते हो मेरा लुक. मैंने सूट कैरी किया विद दिस हैवी दुपट्टा. और so आइए चलते हैं, देखते हैं कि अनिका क्या कर रही है और उसके बाद मैं सारे फंक्शन आपको वन बाय वन बताती जाऊंगी. So let's come with me. मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली. हाय गाइस, सो अभी हम वेन्यू पे आ चुके हैं और इट्स अ संगीत सेरेमनी टुनाइट एंड वी गोना हैव सो मच फन हियर. सो लेट्स सी. अनिका भी बहुत एंजॉय कर रही है. अनिका, से हाय टू ऑल. से हाय टू ऑल. हाय. ओह वाओ. अनिका, अनिका कैसे लग रहा है? बेबी एंजॉय कर रही है. एंजॉय कर रही है. हाँ. So this is our look. See. प्रॉपर पटोला रख रहा है स्वैग. सूट पटियाला शाही चुन्नी तेरी ब्लैक. आओ मुंडे होके भरते तेनू तक तक. डीजे बेस बड़ा बेस गोली खा के मारेगा के. अभी आई एम बैक टू माई रूम. और घर में दो वेडिंग हो तो एक्साइटमेंट हाई लेवल की हो ना तो बनता ही है. एंड वी आर इंजॉइंग हियर अ लॉट. अनिका भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है. बहुत एक्साइटमेंट है. कल वेडिंग है और आफ्टर 3 days अनिका के मामा जी की भी वेडिंग है, यानी कि मेरे भाई की वेडिंग है. तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ
और अभी नाइट हो गई है तो मैं यहाँ से निकल मिलती हूँ. So I'll catch you tomorrow. Bye. Chanderi silk saree. Basically, I love to wear silk sarees like Chanderi and Kanchipuram and all. And guys, I love this look. So this is my look for wedding. And look all around. बेसिकली क्या होता है कि हमारी इंडियन वेडिंग जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार चीज़ क्या होती है कि हम इतना अच्छे तरीके से हर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं. छोटी छोटी सेरेमनीज़ होती हैं, फंक्शंस होते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं. सबसे ज़्यादा इन्जॉयमेंट किस चीज़ का होता है कि हम सारे एक साथ होते हैं एक जगह पर. जितने भी रिलेटिव्स हैं सब दूर दूर से आते हैं और सब एक साथ ये वेडिंग फंक्शन इन्जॉय करते हैं. सारी सेरेमनी साथ में इन्जॉय करते हैं और ये हर एक मोमेंट को इतना ज़्यादा मेमोरेबल बना देते हैं एक ब्राइड के लिए और एक ग्रूम के लिए. तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी है एंड आफ्टर 3 days मेरे भाई की भी शादी है. तो मैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो आई विल कैच यू लेटर. बाय बाय.
नया वीडियो। And we are so happy. अनिका बहुत एंजॉय करी और सारे लोग, हम सारे रिलेटिव्स बहुत एंजॉय कर रहे हैं और सब लोग अनिका से यहाँ पे फर्स्ट टाइम मिले हैं। अनिका का ये पहला वेडिंग फंक्शन है हमारी फैमिली का, तो अभी सब उसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं उसके साथ। एंड सी ये वेडिंग का लास्ट फंक्शन है और इसके बाद हम सब अपने घर चले जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेरे भाई की वेडिंग है, तो उसके बाद से सारे फुटेज और वीडियो में आपको मेरे भाई की शादी की दिखाऊंगी। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स टू शो यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप भी अनिका के साथ इंजॉय कर रहे होंगे और इस पूरी वेडिंग को, इस पूरी पार्टी को आपने भी इंजॉय किया होगा। तो जाइएगा कहीं मत एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। और विशुद्ध और सभी की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी बेस्ट विशेस अपकमिंग लाइफ के लिए। देखा तो ये जाना सनम। हाय गाइज, आई एम बैक। सो गाइज, आज के फंक्शन ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं, बस मुझे मेहंदी लगानी बाकी है और कल वेडिंग है। तो कल का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है सबके लिए, क्योंकि ये मेरी मम्मी की साइड से मेरे मामा के घर में पहली वेडिंग है, तो सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। एंड लेट्स सी कल क्या होता है। और बहुत सारे काम पेंडिंग है जिसे फटाफट फिनिश करना है और बाकी की सारी अपडेट्स मैं आपको कल दूंगी, तो कहीं मत जाइएगा एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे।
से जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा